Good morning, everyone. Today I will teach you CSV files, and you should know what is basically CSV file. So the CSV file definition is comma separated files. Comma separated files. So you write definition for it. First you start with CSV, write definition of CSV file, and then I will teach you more on the programming part. Okay, so you write definition CSV file. CSV files are the text files also known as delimited files, delimited, delimited files that store tabular data stored in rows and columns where comma delimits every value. That is, values are separated with comma. We can have different types of delimiters. These can be tab, colon, vertical bar, semicolon, etc. I share a screen for you. And then I will start Python here. Suppose this is semicolon, this is colon, okay, and this is vertical tab. Okay, these all can be a part of delimiters, and of course semicolon and comma is there. Comma separated. Tab is also the \t. Okay, these are the different types of delimiters which may have. Now you write Python CSV modules functions. Python CSV modules. Python CSV modules provide functionality to read and write tabular data in CSV format. To read and write tabular data in CSV format. It has two functions. Number one, writer, 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 to write objects in a CSV file. उसी तरह होता है रीडर, READER, reader, to read data in a CSV file. Import CSV. ये भी लिखना. Reader to read data from CSV file. Writer to write data in a CSV file. Import CSV. We use the statement import CSV to call the CSV modules. अब जैसे कि हर फाइल में होता है, इसमें भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग CSV files. Opening and closing CSV files.
Now, what I will write, opening and closing, very simple. F is equals to, first you have to write import. Import CSV. And then suppose file is equals to CSV dot open. And suppose I am writing here STUD student file. STUD dot CSV, comma. If you want to write, you use W mode, and if you want to read, you use read mode. So first one I am taking example here as, आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं बेटा. सपोज यहाँ और यहाँ पर R फॉर रीड. सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इसके अलावा अब मैंने जो आपको फंक्शन बनाया है वो भी बताता हूँ. अब सबसे पहले CSV फाइल कहाँ बना सकते हैं? वी कैन मेक CSV फाइल इन अ नोटपैड, और इन पाइथन ऑल्सो वी कैन राइट डेटा इन अ CSV फाइल. सो वी आर स्टार्टिंग विद नोटपैड कॉन्सेप्ट. पहले नोटपैड पे एक CSV फाइल बनाते हैं और उसे कहीं सेव कर देते हैं. फिर देखो मैं आपको प्रोग्रामिंग समझाता हूँ. सो CSV फाइल का काफ़ी यूज़ है. सो सिंपली आई विल सेव CSV फाइल हियर. So what I am doing here, CSV नोट, पहले तो वो उस पे कर लें, नोटपैड पहले बनाए तो सही फिट होते हैं. So here I am writing name of the student, ठीक है. Then comma separate, comma. You want to take roll number also, you can take. RNO, name, then marks, total marks, total. ठीक, roll number 1, name, any name, ABC, and 77. Roll number 2, name, XYZ, take 99. Roll number 3, any name, PQR, comma separated file, that is 88, anything. After that you save. Remember this is also row number 1. अभी मैं आपको इसको सही करा दूंगा. Just see, first you see save as, and I am giving the name as where it is saved in desktop, on desktop. इतना बड़ा नाम नहीं करते हैं, कहीं छोटी जगह पे सेव, ई पे सेव कर देते हैं. और यहाँ दे देते हैं stud dot csv, and then save it. ऑप्शन आप चेंज भी कर सकते हैं, stud dot csv, minimize. Now I'll run this program. Sorry. Undo. Okay. So एक प्रोग्राम रीडिंग वाला बना लेते हैं. फाइल ओपन कर लेते हैं. F is equals to, I think E पे सेव किया था इसे, E colon F is equals to open E colon, and then I am writing here stud dot csv. It's in read, has to be open in read mode. I'll write read, and then I have to take a rec variable for record. And when you are writing here, you should write csv dot open, and then यहाँ पर f dot reader. ओके, वहाँ पे लिखने की ज़रूरत है क्या? मेरे को तो नहीं लगता है कोई ज़रूरत है.
क्योंकि CSV तो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है वहां पे। ओके, CSV रीडर और राइटर में यूज, इसमें तो जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल फाइल ओपन होगी और यहाँ पर CSV लिखना पड़ेगा। CSV सिंटैक्स याद रखना, CSV dot reader or file F, you have to write it here, and then for I in rec, and you write it here, print I, run it, run module. Okay, now see here, as I told you, this is row number 1. Okay, so what I will do it here in the notepad itself, I will delete it, no need. Understood? And save it. Save. Now, as you will save, the save result is reflected back here. Run module. Now see it. It is coming in the form of list. Square bracket. Now what I will do now, I will write it here in a much better way. Roll number, देखो, and then I. But what I'll write? I 0. After that, print name, and then I write I 1. Then I write print address. I address नहीं था, sorry, total marks था. Total marks, that is I2, I small. I2. And now see the effect of the result. Now I'll run this program, run module, okay. Now see, first the result was coming in this one. Now it is coming roll number 1, name ABC. Total marks 77. Then roll number 2, name, total marks 103. Hopefully the concept is clear to you, how to work in CSV file. And one more thing you remember, this CSV file is stored in the form of Excel. देखना अभी Excel में दिखेगी आपको, XLS फाइल जो CSV एक्सटेंशन होगा, E में सेव किया था ना, STUD. You see here, Excel. आराम से ये रोज एंड कॉलम्स में एडजस्ट हो गया. आप यहाँ पे कुछ बढ़ा भी सकते हैं. Suppose I will write 4 and then I write, suppose Guru ABC कुछ भी लिख दें. हर्षिता 87. Then I write 5. चलो प्रू बोला था, प्रू लिख दूं और 88 कर दूं. एंड सेव, मस्ट सेव करना मत भूलना. सीधे में कंफ्यूजन होंगे, यस कर दो, कोई दिक्कत नहीं. कम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके, close this Python and you come here, run it. Now see the 2 names I have added are also displayed. So that's the beauty of CSV file, कि आप CSV फाइल को कहीं पर भी यूज करके बना के then you can read that file in your Python, yeah, you can read that file using Python scripting. In Python coding you can use that. You can open it, you can read it, you can modify it also.
तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब राइट का सिस्टम में बताऊंगा हाउ टू राइट रिकॉर्ड्स। ओके, ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट। Now one thing I have taught you about reading. Now next is your writing. Welcome to the Python. This program you can also make in the form of function. So आपको function करने में आसान। बोर्ड में भी function format में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या नाम था फाइल का मेरा? Yes. So I will write it here. Def function format में कर देते हैं display records. Okay, and this whole I will select and press tab. So indented. Next is your def write data. Take, and here I will write okay, import CSV student.csv writer CSV. लूप बना लो और इनपुट करा लो कितनी इंफॉर्मेशन को CSV में राइट करना है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर आई इन रेंज 5 टाइम लूप चलेगा या 5 रिकॉर्ड्स करना है या n टाइम करना है। ऐसा कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं int n is equals to int input enter number of records. ठीक, and then I will write, instead of that I will write n, तो number of records जितना चाहिए उतना लिख लेते हैं। Then I want RNO is equals to int input enter roll number, then name is equals to input enter name, then total name आप वेरिएबल डिफरेंट कर सकते हैं, that's not a big problem, input enter total marks। ठीक, int लिखना या float लिखना पड़ेगा, जो भी आप चाहिए, if you want int float etc. Once the data is entered, you have to write this data into a CSV file. Now CSV file में लिखने का तरीका क्या है कि वो एक लिस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, as I displayed you. So I will write it here, rec is equals to, I will take this as RNO name and total. ठीक है, and I will write that into CSV dot writer rec, यही तो होता है क्या है मगर आपको एक रिकॉर्ड तो बनाना पड़ेगा ना पहले। पहले तो एक रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, छोड़ दें डायरेक्टली यहाँ हो जाएगा, क्योंकि फाइल का कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये राइट रो करेगा, ये दिक्कत आएगी। एक मिनट, ये राइट रो होगा, ये राइट रो होगा, राइट रो, ठीक है, एक रो राइट करेगा। और जो फाइल को राइट करना था वो पहले फाइल ओपन भी तो करनी पड़ेगी। f इज इक्वल्स टू ओपन ई कोलन, इसी को ले लेते हैं std.csv and then I will use this in write mode। अपेंड मोड ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड राइट हो जाए। W भी कर सकते हैं,
तो W में overwrite हो जाएगी. अभी I will show it to you, don't worry. And then I will write here rec is equals to same concept CSV dot writer and what F. Okay. And then यहाँ पर R कर लो. And instead of CSV, you write it here rec dot write row. Rec. R. This way. So first you have to open a file. I am taking appendment so that I will add record for rec is equals to CSV dot writer. Record अपना बना. Now number of records कितने चाहिए एंटर करने के लिए, तो वो करते जाना, एक एक करके रिकॉर्ड राइट होता चला जाएगा. आई विल रन एंड शो इट टू यू. n इज इक्वल्स टू n क्या चॉइस इज इक्वल्स टू बेसिकली 1 कर देते हैं. while ch लेस देन इक्वल्स टू 2, if ch इक्वल्स टू 1, this elif ch equals to 2, write क्या, अरे यार, write डेटा. ठीक, चॉइस इनपुट भी तो होनी चाहिए. ch equals to int input, enter your choice. 1 disk, 2 write data. Okay, run it, run module. Okay, क्या हो गया भाई? Invalid syntax. Where it is? Invalid syntax. Disk choice if ch int correct है. इंडेंटेशन प्रॉब्लम है. ओके, एक बार और रन करके देखते हैं. रन इट. इनवैलिड सिंटैक्स. while ch less than equals to 2, ch is equal to enter your choice 1 2. okay, input enter your choice. रॉन्ग ब्रैकेट का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. इससे क्या मतलब है? while ch this import write data rec for in. okay, what is the problem? while ch less than, if ch equals to 1, this. अच्छा, ओह, एल एफ, इसको क्या प्रॉब्लम है? if ch this l if invalid syntax. why I'm writing colon here? Run. okay, now again I will run display permission denied stud estud csv. why permission denied? grant permission. okay, file, कुछ प्रॉब्लम हुई है. file save as stud save
Do you want to replace? Yes. To keep this format which leaves out any incomplete, we click yes. To preserve the future, to see when we lost, click help. To keep this format which leaves out any incompatible feature, click yes. To preserve the features, click no. Okay. नोटपैड में खोलते हैं फाइल सेव यस ग्रांटिंग का कुछ प्रॉब्लम है रन मॉड्यूल choice number 1 okay that has come now to write data enter number of records I just want to write 2 records roll number 4 name कुछ भी marks कुछ भी roll number 5 name कुछ भी marks कुछ भी and to display अच्छा 2 एक रिकॉर्ड फिर एक और रिकॉर्ड लेते हैं रोल नंबर 11 नेम कुछ भी मार्क्स कुछ भी एनीथिंग यू एंटर and then you press A1 so list out of range it is showing so marks are added yes agreed marks are added but there is some problem with the total marks list index okay वो n पे चल रहा है ना बेटा तो अब इसके बारे में ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने रिकॉर्ड्स हैं हियर आई एम आस्किंग टू दिस फॉर आई इन रेक write data in number of records it is entering and then for I in rec it is showing E:*STUV CSV it is crossing the limit run it again and press choice number 1 index out of range because here it is 1 2 3 फाइल्स का कुछ चक्कर है E:*read and W for write wait run model okay just a minute run choice number 1 display showing error okay फाइल को क्लोज भी तो कर देते हैं हो सकता है फाइल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो इसलिए from f dot close next here also f dot close time is running so in next class I will teach more on CSV file and whatever the errors are coming that I will show it to you in my next class okay so what I do I will press 2 first run 2 enter number of record 1 some name and some values enter and I will display okay it is showing error after this that means after writing it is showing error r is equal to rec right row r okay फाइल क्लोज हुई है W to write STU writer that is rec STU writer CSV file CSV rec dot STU writer rec dot write STU writer STU rec R like that though there is no error okay close okay we'll meet in the next class till then goodbye have a nice day